Hello, super students. It's been long since we have talked, but I'm here, and somebody told me that you are looking for self transformation. You're not happy with your current state, and you have a, a vision, a version of yourself that you want to reach. So, you want to transform yourself from point A or from person A, which is your current state, to the person B, which is your ideal state. And there is so much information out there on self transformation. There is so much noise out there that you are confused. Okay, yes, I want to improve my habits. I want to overcome these challenges of overthinking, low mental health, anxiety, self doubt. ये सारे हर्डल्स को भी क्रॉस करना है, अपनी लाइफ को भी बेहतर करना है, सारा कुछ करना है, बट समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू किया जाए. सो in the first three episodes of Super Space podcast, I talked about that how healing is worth it. But if you have decided that you want to heal yourself, if you have decided that you want to transform yourself, it is worth it. So this whole journey, yes, it would take a lot of work, it would take a lot of effort, but it is worth it. And then I talked about how you have a superpower of choice. The day that you decide that you're going to transform your life, that you're going to undergo this self transformation and you're going to take matters in your own hands and you're going to just do all the work, whatever it takes you to become your ideal version, to become your higher self, you become so powerful. By the way, this is not all coming just from my personal experience. I have read self development books or self help books or books on transformation and, everything on personal development, I think for a whole decade. My first book that I read in metric was about uh, a personal development book. And since then, I have read every almost every popular book and also non-popular book or books on this whole journey. Everybody who's talking about self transformation, I have heard him or her or read it about it or watched a video over it. So I know the syllabus and I know the literature out there. So in order to save you time and in order to save you all of that effort, I'm just going to give you step by step directions. So in this video, I'm going to just give you the first step that you need to do. And once you do it, everything would be so much clear. And I will obviously share the next steps with you in the upcoming videos. So the number one step is to be crystal clear about your new identity, to be very transparent and honest about your current stage. See, you have to audit yourself right now. ठीक है, आपकी जो हैबिट्स हैं, अगेन मैंने आपको बताया, जैसे आपकी क्या थॉट्स हैं, रिकरेंट थॉट्स क्या हैं आपकी अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, आपका क्या बिलीफ सिस्टम है अभी करंट. ठीक है, उसके बाद आपकी आपके क्या हैबिट्स हैं, आपकी क्या लाइफस्टाइल आप इस टाइम पे जी रहे हो. एवरीथिंग लाइक यू नीड टू क्रिएट अ प्रोफाइल ऑफ योर करंट सेल्फ, और जितना ऑनेस्ट होके आप कर सकते हैं उतना ऑनेस्ट होके. And then you need to create a very clear version of your higher self. Like आप क्या बनना चाह रहे हो. Somebody says कि let's say कि अभी मैं, फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, आई वॉज समबडी जो कि बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करती थी, जो कि स्ट्रगल करती थी ओवर थिंकिंग के साथ, ऑलवेज स्ट्रगल्ड विद हर मेंटल हेल्थ, extremely hypersensitive and didn't know कि ये जो, and I used to see my sensitivity or my sensitive heart as weakness, like as a curse, that why do I feel so much. Somebody who was broke, somebody who was burned out from work, somebody who was uh you know deep in the shit, I would say. So I was very clear of where I was standing at that particular time, and I was very aware. Few years back, I was very aware of my current stage. Okay, this is where I am. I am deep in shits, and I need to transform myself. And you always have some vision. Ki, I really would like to. I would really like to be this kind of a person. Like if I am someone who struggles with, let's say, I really want to make new friends, but currently I am someone who has no confidence and who struggles with, you know uh,
in conversation with other people. So this is my current stage, but I know that my ideal version or my higher self version, he or she is really good at communication and is really good at making friends, and it in fact has a really good social circle. So from point A to point B, what you need is that you need to create a very very clear profile of what you want to become. Okay, so I would say take out your notebooks and just draw columns, and just you need to do this exercise as you are like literally describing yourself, literally everything: how you eat, how you smile, how you walk, what is your personal hygiene routine, what are your thoughts about money, what are your thoughts about religion, what are everything, like you just like आपकी पूरी फाइल आपने बनानी है जो आपकी अभी करंट स्टेज है. And similarly you have to create this whole new identity that you want to become. And the cool thing is that once you decide कि okay ये मेरा एक current stage है, this is who I am, I do not like myself right now, I don't, I feel like कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ या मैं इससे एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ और मुझे ऐसे बनना है. ये मेरी सारी, मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह चलूँ, मैं चाहता हूँ मैं इस तरह से बोलूँ, मैं चाहता हूँ मैं इस तरह से दोस्त बनाऊँ, मैं चाहता हूँ मैं इस तरह के खाने खाऊँ, मैं चाहता हूँ मैं इस तरह की जगहों पे ट्रैवल करूँ, मैं चाहता हूँ मैं इस तरह से दिखूँ, इस तरह से सुना चाहूँ. एवरीथिंग, each and everything you're going to write, and you're going to create this whole new person that looks like you but is better than you. And now begins the journey of self transformation. When you would be clear about your current stage and your stage that you want to become your higher self, or let's say your super self, then once you have drafted this whole identity, now after this stage you will become hyper aware of all the things that you are doing that are not supporting your case to become this super self. For example, what do I mean by that? For example, now I have created this version. When I was doing this exercise on my journal, I think last year I did that. So I decided, okay, let's say in terms of my content creation journey, I decided that I am someone like this summer creates weekly YouTube videos, right? In the current self, I was even struggling to make one video per month. Like I was just somehow being very resistant towards making YouTube videos. But this super self summer makes weekly YouTube videos, and in fact I was literally thinking about creating or starting a podcast. Like this idea was in my head last year. So this version creates weekly YouTube videos. This super self version, I'm very clear about कि वो क्या content create करती है. I'm very clear about that, how she talks in her videos, how comfortable she is in front of camera. And here I am in the current self. So whenever like I would not create my weekly video, I would become self aware that, oh, I created a gap. Like I took a decision that was not aligned to this self. So that is actually the key of self transformation. Once you decide that you want to be a super self, once you decide that you want to become this person, now your job is to take actions, is to do everything like this person. For example, you have decided that your super self is a very fit person. उसका एक करंट वेट है, उसका एक करंट बॉडी फैट परसेंटेज है, उसका एक करंट वर्कआउट रिजीम है, उसका एक करंट फिटनेस लेवल है. नाउ योर जॉब at this stage, at your current stage, is to do all of the things that your super self does, even before you look like him or her. So, in your current stage, you would start working out because your super self works out. And now you would say,
यही तो मसला सारा आता है, लाइक यही तो मसला आ रहा है कि येस माय सुपर सेल्फ वर्क्स आउट एवरी डे, बट आई कैन नॉट वर्क आउट, लाइक माय करंट सेल्फ इन माय करंट स्टेज मुझसे एक्सरसाइज डेली नहीं होती है. Why? That is another like mind boggling thing. Why? Because you are currently thinking that you are your current self. So basically there is an identity 1 and there is identity 2, which is super self. You are in the middle, right? You're, let's say you're in the middle. When you and your super self does exercise and your current self does not exercise. Now you are in the middle. Now every day when you wake up and you do not exercise or you make excuses and you just skip your exercise, you become this identity. On the days when you feel like you don't want to exercise but you still do, you become this identity, this version of yourself. Are you getting the point? Like every time you take an action that this identity do or does, I don't know, you become this version. And every time you do something that this identity does, you are more near towards becoming this version. So in front of you, you have two versions. Your current stage, जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जिसके साथ आपको बहुत मसले हैं, आपने आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं. और इस तरफ आपकी सुपर आइडेंटिटी सेल्फ है, आपकी सुपर सेल्फ है, जिसके ऊपर आपने अपने पिंटरेस्ट बोर्ड्स बनाए हुए हैं, जिसको आप, अगर वही सुपर सेल्फ आपको किसी में दिखती है तो यू फील जेलस, यू फील एनवियस एंड यू फील, or you know you like, if you want, if you're struggling to do exercise and your super self does exercise and you see somebody जो कि बहुत ज़्यादा एक fit तरीके से exercise करता है, either you get inspired or either you get jealous, or you watch that kind of a content thinking कि यार कभी मैं भी इस तरह से fit हो जाऊंगा. So the point of self transformation or the journey of self transformation is simply to take decisions that your super self would do. That's it. The more decisions you take that are aligned with your super self, the more easier it becomes for you to self transform. ये सारा फंडा है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का. और why did I ask you to create these both identities? Because जितनी clarity आपको होती है ना, and उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होता है अपने decisions लेना. बिकॉज जब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है ना, जब आप अपने आपके दिमाग में चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं कि यार यहाँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ, यहाँ मैं स्टैंड कर रही हूँ और यहाँ मुझे जाना है. और अगर मैं यही यही हैबिट जो है ना, यही डिसीजंस इसी पर्सनालिटी के साथ चलता रहूँगा, इसी आइडेंटिटी को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, इसी आइडेंटिटी का मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो मैं कभी यहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा. बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, आप इस तरह का कंटेंट देखते हैं, तो आप ना 2 कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आएँगे. नंबर 1 इज़ कि क्रिएट योर अल्टर ईगो. बेसिकली वो यही कॉन्सेप्ट है कि एक आपका करंट वर्जन है और आप एक अपना इस तरह का वर्जन बना लें जो कि इतना क्लियर हो, एक करेक्टर बना लें, एक अल्टर ईगो बना लें जो कि आपका एक वो सुपर सेल्फ है. एंड नंबर 2, आप एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा डॉक्टर जो डिस्पेंजा का, इज़ अ वेरी फेमस गुरु, एंड ही सेज दैट, उसकी पूरी बुक है, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ breaking the habit of being yourself, or I think it's just, yes, breaking the habit of being yourself. And this is exactly what I have explained to you. यही concept है कि you have to break the habit of being yourself and you have to create an alter ego, or I would say your super self. You have to be so clear. So clarity is the requisite of doing it successfully. ठीक है. आपका ये करेक्टर इतना क्लियरली आपने इसको डिस्क्राइब किया वो अपनी सुपर सेल्फ को, दैट इट फील्स रियल. इट्स लाइक जैसे मोबाइल के अंदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, कि आपके पास 2 सिम है मोबाइल के अंदर और आपने सिम
वन से कॉल करनी है या सिम टू से कॉल करनी है. इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट. At every point, at each step of your life, especially when you are going through a self transformation, especially when you are at your when you want to change your current self into your super self, at each step, at each thought, you have the choice. Either you want to think like your current self, you want to behave like your current self, or you want to think and behave or do things like your super self. सो लेट्स से आप स्कूल में हो या आप एग्ज़ाम दे रहे हो एंड आपको कुछ नहीं समझ आ रही है. अब टक 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 आपके वो जैसे ड्रामास के अंदर जो होते हैं ना, वो एक बैकग्राउंड बज रहा है. नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप चीटिंग करोगे या आप चीटिंग नहीं करोगे. अब आपकी करंट सेल्फ, लेट्स से कि आप उसमें चीटिंग करते हो, और अगर आप चीटिंग कर लेते हो इट मीन्स यू आर बैक एट योर बीइंग ओल्ड सेल्फ. बट अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, आप कहते हो कि नहीं यार मुझे सुपर स्टूडेंट बनना है, so I would say you would not cheat. Like your super self does not cheat, so you would not cheat. So जितना ज़्यादा आप अपनी इस करंट आइडेंटिटी से डिटैच होंगे, लाइक यू वुड स्टॉप सीइंग योर सेल्फ लाइक दिस, एंड जितना ज़्यादा आप अपनी इस सुपर हायर सेल्फ से लॉयल होंगे, सिंसेयर होंगे, उतना ज़्यादा आपकी जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है वो उतनी आसान होगी और वो उतनी जल्दी हो जाएगी. ठीक है. This is the funda of self transformation. Up in the next episodes, I'm going to give you a lot of tools, because I told you guys that, like, right now at this point of life, I'm here. And if, like, mentally and internally, I'm here at least. I have literally created a whole new belief system and I have adopted it. And in terms of habits and in terms of systems, until very recently, जो मुझे लगता है कि मेरी एक दो लास्ट challenges रह गए थे लाइफ के अंदर, I would have completed it successfully. And internally I'm here. मे बी मेरे एक्सटर्नल्स उस तरह से शायद नहीं दिख रहे हैं जो कि मैंने सोचा हुआ है कि इसके होंगे, बट इंटरनली आई एम हियर एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. सो I'm going to share all the tools, all the secret hacks, everything inside me, all the wisdom that I got in this journey. I'm going to share with you one by one. So this was the first step, is to be very clear कि आप कहाँ पे stand कर रहे हैं, आपको कहाँ जाना है. Like, be obsessed with creating this personality. Be so obsessed with becoming your super self that you're like आपको अपनी जो current self, and I'm not asking you to hate yourself, no ways. Like, if currently you procrastinate, if currently you delay your important work, if currently you are a person जो कि अभी उस तरीके से पैसे नहीं कमा पा रहा है, जो भी आपकी करंट स्टेज है जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, आई एम नॉट आस्किंग यू टू हेट इट. नो, आई एम आस्किंग यू टू आइडेंटिफाई, ओके ये मेरा चैलेंज है, एंड आई एम आस्किंग यू टू just do all in you, just take all the effort to become this super self. ठीक है. एंड आई नो आप इधर सैड होते हो, इस स्टेज के ऊपर आप परेशान होते हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो, आप बदलना भी चाह रहे हो, आपको चीज़ें समझ भी नहीं आ रही हैं लाइफ में. बट जितना आप वहाँ बैठ के सल्व करोगे ना उस स्टेज के ऊपर, जितना आप अच्छा, फिर आपने विक्टिम माइंडसेट के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना. लाइक विक्टिम माइंडसेट इज नॉट अलाउड इन सुपर यूनिवर्स. ठीक है. जो हो गया सो हो गया. जितनी देर आप यहाँ पे क्लिंग करते रहोगे, जितनी देर आप अपनी सिचुएशंस को एनालाइज करते रहोगे, जितनी देर आप अपनी सिचुएशंस को एक्सप्लेन करते रहोगे, जितनी देर आप अपनी इस करंट सिचुएशन के बारे में एक्सक्यूजेस देते रहोगे, उतना ज़्यादा आप यहाँ पे आना डिले करोगे. वट एवर हैपेंड, wherever you are. Now you know where you need to go, and just taking those actions that will lead you here, बस वही आपका काम है. That's it. And I know कि वो एक्शंस लेना ईजी नहीं होता. आई नो वहीं पे तो सारी रेजिस्टेंस आती है, दैट यू वांट टू बिकम, आपको क्लियर है कि आपको क्या करना है, बट वहीं पे सारी रेजिस्टेंस आती है. सो फॉर इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस, इन ऑर्डर टू ओवरकम सेल्फ sabotage, in order to overcome self doubt, in order to overcome self hatred, even in order to overcome all the hurdles that you face while going through this transformation, I'm going to help you in that process, because I'm someone who has went through this journey, and I feel I have something
which might help you, which I'm not like not might, will definitely help you. So yeah, stay tuned. This you do this exercise and you let me know in the comment section. And on the side notes, I was reading this book, Crime and Punishment, by Fyodor Dostoevsky. I hope I've pronounced it clearly. This book right here, uh, I अच्छा मैं बताती हूँ, like this book right here has, आई वुड से, मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा है, लाइक इसने मेरे दिल को दोबारा से जगा दिया है फॉर द रीडिंग. आई टोल्ड यू आई हैव बीन रीडिंग सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स फॉर पास्ट 10 years एंड मैं थक गई थी. एंड स्पेशली आई एम डन लाइक इन द सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी. ऑफ कोर्स आप सीखते रहते हो, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते रहते हो, बट देर इज़ अ पॉइंट, एक हीलिंग के अंदर भी आपका एक पॉइंट आता है या आपको इसमें आता है व्हेन यू फील लाइक यार मैंने जितने सबक सीखने थे ना वो मैंने सीख लिए हैं और अब मैं एक्शंस भी ले रहा हूँ. तो आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को जो है ना एक प्रोजेक्ट बनाकर काम नहीं कर सकते हैं. एनीवे, सो आई वाज लाइक डन विद रीडिंग ऑल ऑफ दीज बुक्स एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, आई हैव फिगर्ड इट आउट, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू. मुझे सिर्फ एक्शंस लेना है, मैं बार बार इतना लिटरेचर नहीं पढ़ सकती हूँ उस चीज़ के ऊपर. एंड आई वाज जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ डन विद दोज बुक्स. एंड देन आई wanted to read because I cannot survive without reading stuff. I'm a reader by heart. सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग जो कि मतलब एक रिवाइव कर दे ना आपको, एक वो एक रीडर स्लम्प से निकालें. एंड दैट्स व्हेन आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस बुक एंड आई थॉट ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई. एंड आई रेड दिस बुक. इस बुक का रिव्यू मैं आपको दूंगी इंस्टा की स्टोरीज के ऊपर, मैं लगा दूंगी. बट इस बुक के अंदर लाइक why I'm unable to like give a proper review because I just completed it today and I'm still processing the feelings. Uh, a very short review, if I have to summarize this book, is that especially about this author, he's very famous Russian author, like one of the greatest. This book was written in 18th century. It's still relevant, people are still reading it, so it is a masterpiece indeed. I would say it is indeed a masterpiece. uh, अगर ये बुक मैं उनको सजेस्ट करूँगी इफ़ यू हैवंट रेड अ बुक जिससे आपको कुछ फील हुआ हो, और इफ़ यू हैव बीन फीलिंग नम्ब लेटली, स्पेशली विंटर्स के अंदर, then you should definitely start reading this book because this book explains people emotions, their psyche, uh, their inner conflict, uh, social situations, everything, tragedies, love, uh, family's bond, everything, like everything. And of course the title is Crime and Punishment, so obviously the concept of crime and the process of all of that and the journey of the protagonist, it explains it so beautifully that it feels like you are living it. So this is like my first review, but of course I would just make some thoughts about it and I would share with you guys. But yes, if you want to feel something, and uh, if you want to feel the feelings of a troubled man but an innocent soul, I would say, and his journey of transformation from a guy who murdered somebody to, जो आप देखेंगे कि एंड पे उसके साथ क्या होता है और उसकी क्या जर्नी थी, उसका क्या करेक्टर डेवलपमेंट थी, और उसका वो जो इंटरनल सारा मोनोलॉग था और वो सारा कुछ, उफ, you should read it. You should read Crime and Punishment this winter, I would say. And yes, that's been happening. And I have again decided to post weekly on YouTube. This is the one goal that I haven't achieved yet. So I thought कि 2025 end हो रहा है. Let's just do it. And and I will share how much goals I achieved. And I think in the one of the last episodes of this year, आई वुड शेयर कि मैंने क्या गोल्स सेट किए थे और मैंने वो गोल्स अचीव कर लिए और मैंने कैसे किया और मेरे लिए कैसे आसान था उन गोल्स को अचीव करना. इफ समबडी हु हैज़ लाइक केप्ट गोल्स फॉर होल लाइफ और बहुत मुश्किल होता था उनको अचीव करना, एंड नाउ आई सी कि मैंने अपनी 2025 में अपने बहुत सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं. मेरा विजन बोर्ड में से बहुत सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं. So I would share all of that in the coming episodes, and of course we talked about how you need to be clear on the identity that you want to create, and I would share the next step of it, the process of self transformation as well. So yeah, that's all for this video. Thank you so much for listening or watching me, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.